Hello and welcome to this new tutorial. In this tutorial, we shall talk about the concept of political equality. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और इस ट्यूटोरियल में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में जानेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। वेल, बाय पॉलिटिकल इक्वालिटी we refer to the extent to which citizens have an equal voice over governmental decisions. In fact, one of the bedrock principles in democracy is the equal consideration of the preferences and interest of all citizens. And therefore, this is expressed in following principles. And these principles are: one person, one vote, equality before the law, and equal right of free speech. Well, so when we talk about the concept of political equality, the political equality basically refers to the extent to which citizens have their own equal voice over the governmental decision. What does it mean? It means that how far people's voice are more powerful and how far it is above the governmental decision. That means whether people can influence as well as whether people can put pressure on the government when it comes to certain decision which government is taking. And in this picture we need to remember that means people have all the power to raise their voice, and this power they have received through constitutional rights. All the rights especially which are associated with participating in democracy, participating especially for the state, example when it comes to contesting election, when it comes to casting the vote, as well as when it comes to criticizing the government. So therefore we need to understand that the concept of political equality basically talks about the voice of the people, and these voices are very important to put enough pressure on governmental decisions, and especially the government, if at all, if government is taking certain decisions which are going to hamper the society and individuals by and large. And in fact, one of the bedrock principles in democracy is the equal consideration of the preferences and interest of all the citizens. Now here we need to understand that in democracy, government of the day, system and administration must give equal consideration to all the people at one go. There cannot be a discrimination, there cannot be a classification, there cannot be even segregation of voices or the preferences which are supposed to be for the welfare of the citizens, as well as when it comes to the interest of all the citizens. So as people have the voice to raise over the issues when it comes to the governance, as well as the state, the democracy must create enough space for equal consideration of all their ideas, all their criticism, as well as a recommendation, because here the point is that the interest of all the citizens must be protected, and the individual by and large must be given enough protection. And therefore, what are these principles which are actually creating that voice, actually putting enough pressure on the government? And here these principles are basically that one person, one vote. That means every one person will have one vote. The value of every vote would be one vote. Second is that everyone would be treated equal before the law. There has to be a equality. That means there cannot be a injustice in the name of, or there cannot be even discrimination, especially in the name of a caste, color, creed, gender, or even for that matter religion or a faith. And therefore every individual have an equal right of free speech. That means you have a right to speak out, you have a right to
voice your opinion, and this is what, in short, the political equality talks about. जब हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल इक्वालिटी एक ऐसा हथियार है जो हर एक इंसान को मिला है, हर एक सिटीजन्स को मिला है, और इस पॉलिटिकल इक्वालिटी में सिटीजन्स को इतना अधिकार है कि वो अपना ओपिनियन रेज करे, वो अपनी आवाज़ उठाए, और ये आवाज़ हमेशा सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखना चाहिए। जब भी कभी भी अगर सरकार कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जो कि गलत है, या फिर ऐसे डिसीजन जो एक क्लास को फेवर करती है, और एग्जाम्पल कि वो डिस्क्रिमिनेट करती है, उस सिचुएशन में हर एक इंसान को, हर एक सिटीज़न को उसका अपना अधिकार है कि वो अपना ओपिनियन रेज करे। एंड रिसेंटली वी हैव सीन the various demonstration, various protests which has taken place all over the country when it comes to various decision which government of India has taken. They have a right to put enough pressure on the government. और हमने ये देखा है कि लोगों ने ज़्यादातर जितना हो सके गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर बहुत अपनी आवाज़ उठाई है। सिर्फ आवाज़ ही उठाना उनका पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है, बल्कि जो इम्पोर्टेंट फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी का होता है उसमें हर एक ओपिनियन को, हर एक आइडियाज़ को डेमोक्रेसी ने प्रेफरेंस देना चाहिए। भले वो कोई छोटा इंसान बोले या भले वो कोई बुज़ुर्ग अपनी ओपिनियन रखे या कोई अनएम्प्लॉयड यूथ अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहता है, तो उसकी बात सुननी चाहिए। And therefore the democracy always have to protect all the citizen. हर एक की आवाज़ को कभी दबाना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में हर एक आवाज़ को अपना एक स्पेस देना चाहिए, तभी वो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी तैयार होएगी। अगर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है किसी कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर या इवन फॉर दैट मैटर एथनिसिटी के बीच में, तो हम पॉलिटिकल इक्वालिटी कभी भी वहाँ पर महसूस नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इक्वालिटी का यही मतलब है कि हर एक इंसान को अपना अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, सरकार के अगेंस्ट, और कभी कभी सरकार को प्रेशराइज करने का भी अधिकार है। ये डेमोक्रेसी का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसीलिए डेमोक्रेसी में हमेशा उस आवाज़ को सुनना चाहिए, उसको अपनी स्पेस देनी चाहिए, हर एक इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी जब हम डेमोक्रेसी का बात करते हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी में ऐसे 3 बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो पॉलिटिकल इक्वालिटी को सपोर्ट करती है, जो पॉलिटिकल इक्वालिटी को मजबूत करते हैं, और वो है एक इंसान एक वोट। मतलब हर एक इंसान का जो वैल्यू रहेगा वोट का, वो एक रहेगा। भले आप रिच हो, भले आप पुअर हो, मेल हो या फीमेल हो, या कौन से भी जाति, धर्म या फिर पंथ से जुड़े हो, आपका हर एक वैल्यू जो रहेगा, हर एक मत का या वोट का, वो एक रहेगा। इसके अलावा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब हर एक इंसान कानून के सामने, व्यवस्था के सामने समान रहेगा। मतलब कोई भी कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। एवरीबडी हैज़ टू बी इक्वल बिफोर द लॉ एंड लॉ हैज़ टू ट्रीट यू दैट वे। कानून को भी अपनी कुछ ड्यूटीज़ निभानी पड़ती हैं, और जब भी ये सिचुएशन आता है तो कानून हमेशा हर एक इंसान को इक्वलिटी के नज़रों में दिखेगा। मतलब वहाँ पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि आप कितने रईस हैं, आप कितने गरीब है, या आप मेल है या आप फीमेल है। दैट मीन्स द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज़ दैट एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। और जो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी का है, वो है इक्वल राइट ऑफ फ्री स्पीच। मतलब हर एक इंसान को, हर एक सिटीज़न को अपना ओपिनियन, अपनी आवाज़ और अपने विचार सरकार के सामने रखने का अधिकार है। इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट दैट every individual have an equal right
of a free speech. आप किसी भी ओपिनियन को दबा नहीं सकते, भले वो आपके अगेंस्ट हो, भले वो आपको क्रिटिसाइज करते हो। ये आवाज़ कभी भी दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का एसेंस यही है that it believes in a free speech. And therefore, moving on, we have to understand that political equality is therefore vital for citizens to inform governing elites of their needs and preferences. And thus, citizens' participation is the heart of political equality. And therefore, we have to remember that political equality is a most important for a citizens. Why? Because citizens have to inform the governing elite, all those people who are governing us. They are elites because they have that special powers, they have that special space, they have special privileges, and therefore they are elites. And therefore it is our duty that we must inform them about our needs and our preferences, and accordingly those governing elites have to work for the citizens of any state, for that matter, in any democracy. And therefore citizens' participation in democracy is the heart of political equality. If people do not participate in democracy, then there cannot be a free and healthy democracy. There cannot be a successful democracy. And if you want to make a successful democracy, then people participation is a key to that. And therefore people participation is also called as a heart of political equality. अंत में हमें ये समझना है कि ये सारे जो प्रिंसिपल्स है, ये सारे जो अधिकार हैं, वे अधिकार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी सिटीजन्स के लिए। और इसीलिए पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो बहुत बहुत मायने रखती है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सिटीजन्स के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एज अ सिटीजन्स हमें हमेशा हमारे जो गवर्निंग एलिट्स रहते हैं, जो कि पार्लियामेंट में है, उनको जो पूरी सुविधाएं मिलती है वो हमारे वजह से मिलती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर द टैक्स पेयर्स। और कभी कभी हमें उनको याद भी दिलाना पड़ता है कि हमारी ज़रूरतें क्या है, हमारी प्रेफरेंसेस क्या है, हमारी नीड्स क्या है। और इसीलिए पॉलिटिकल इक्वालिटी इज़ अ टूल फॉर द सिटीजन्स इन अ वे टू रीच आउट टू द गवर्निंग बॉडी टू फुलफिल आवर नीड्स एंड आवर प्रेफरेंसेस। और इसीलिए लोगों का पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन इज़ द हार्ट ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब आप पॉलिटिकल इक्वालिटी कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, कभी भी महसूस नहीं कर पाओगे अगर लोग उस सिस्टम में, उस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसीलिए सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इज़ अ हार्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। So moving on to the last point, why do we want political equality? अंत में ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी क्यों चाहिए। सो इसके 5 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉलिटिकल इक्वालिटी इज़ अ वैल्यूड गुड per se. It is basically talking about the ability to express own political views, and we can express our own political views by voting, by participating in the political process, as well as through public opinion. Second very important point, why do we want political equality? Because political equality builds community. Yes, societies are bound together by cooperative activities towards shared goals. This is very important. This is how that precious commodity of a social capital is formed. And if you want to form that society based on the shared values, based on the shared goals, then what we need is political equality to build that community. Third, political participation create legitimacy. Yes, democracy depends on the voluntary acceptance from the government. We need obedience towards the law without constant policy control. And therefore we must accept the election outcome
in the democracy, and therefore what we need is political legitimacy. And the fourth point, political participation is educative. Very true. People learn about politics and about democracy and about their own needs and preferences through participation for all, and therefore equality in political activity is valuable just as equality in education. We have to make sure that people must participate. By participating, people learn a lot, people get educated about the system, society, and how state function. And therefore the last, equal protection of interests. Yes, those who express political voice by voting or by speaking up or in other ways are more likely to have a government policies that pay attention to their needs and preferences, and therefore this sense of political voice represent a general capacity to achieve more and many goals. And therefore we must understand that equal protection of interest is another reason why we need or want political equality. So this is all about the concept of political equality. I hope you have understood the concept of political equality, and I will see you soon in next tutorial. Till then, take care.